If you have any difficulty in new Cartesian sign convention or the concept of new Cartesian sign convention, then you will find it difficult to solve numericals. So my advice, my suggestion, first you go through the part 4 of chapter light. Link for that video has been given in the description. If you go through that one properly, then you can easily understand how to apply new Cartesian sign convention to solve numericals. Now we are going to discuss question number 1 and we'll try to solve that particular question. But before that, let us try to understand this question properly. Question number 1. An object of size 4 cm is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of radius of curvature 30 cm. You are asked to calculate position of image, magnification, size of the image formed, and you are also asked to write down the nature of the image formed. So पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे. This question is related to concave mirror. Question is related to concave mirror, pole, focus, center of curvature. इस क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करें, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव मिरर को नेगेटिव में लेना होता है. सो r इज -30. देयरफॉर f इज व्हाट? f इज r/2. सो इट विल बी -15 सेंटीमीटर. अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट फोकल लेंथ बाय यूजिंग फॉर्मूला f इक्वल्स टू r/2. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर यानी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20. साइन कन्वेंशन यूज करके हम लोग लिखेंगे -20. जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड होगा किसी एक क्वांटिटी का, उस मैग्नीट्यूड में हम लोग को साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली यूज करना होगा, स्पेशली फॉर गिवन वैल्यूज. और जो आंसर हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, उसमें प्रॉपर साइन में ही आंसर आएगा, अगर आप लोग ठीक से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20. ये देखने से हमको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ये कैसे? फोकल लेंथ 15 दिया हुआ, यानी f और p का गैप 15. रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ, यानी c और p का गैप जो है 30 है. ऑब्जेक्ट 20 पे है, तो इसको यहां कहीं बीच में होना होगा, बिटवीन c एंड f. एंड फ्रॉम द रे डायग्राम्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वहां से हम लोग को पता चल जाता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन c एंड f, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हम लोग को फाइंड आउट करना पोजीशन ऑफ इमेज. डायग्राम से मुझे पता चल गया पोजीशन ऑफ इमेज क्या होने वाला है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल में हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. सो पोजीशन ऑफ इमेज यानी वी विल हैव टू फाइंड आउट v. हम लोग को v का आंसर निकालना है. देन आपको अगर u और v पता हो, यू कैन फाइंड आउट m, बिकॉज ये v का पता कैसे चलेगा, पहले मैं वो बता देता हूँ. वो पता चलेगा हम लोग को स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला से, 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f से वी कैन फाइंड आउट v इफ यू नो u एंड f. u और f पता होने से वी कैन फाइंड आउट v. अब मैग्निफिकेशन का पता कैसे चलेगा? मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -v/u फॉर स्फेरिकल मिरर. तो जब आपको v और u पता होगा, यू कैन फाइंड आउट m. देन साइज ऑफ द इमेज फॉर्म यानी h' निकालना है. अगर आपको m पता चल गया, m इज इक्वल्स टू h'/h, जहां h' का मतलब है साइज ऑफ द इमेज, h का मतलब है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपको अगर m और h का वैल्यू पता चल जाए, यू कैन इजीली फाइंड आउट h'. नेक्स्ट इज राइट डाउन द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड. इमेज का नेचर बताने का सबसे अच्छा तरीका है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, और उसका साइन देखना है. आपको वो साइन क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ जो भी साइन आएगा उससे पता चल जाएगा. इफ v इज नेगेटिव, देन
real inverted images are formed, V positive, then virtual and erect images are formed. So V का आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो पता चल जाएगा रियल इन्वर्टेड इमेज, V का आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो पता चल जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देन एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन मिरर में, स्फेरिकल मिरर में रियल इमेजेस ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और अगर कॉनकेव मिरर का केस में आपको पूछा जाए कौन सा स्पेशल केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होने से वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड होता है, सो ये शायद आपको पता होगा बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को अगर एफ और पी के बीच में रखा जाए वी कैन गेट अ वर्चुअल erect and magnified image. So I think you have understood this question properly and you have now a clear idea how to solve this particular numerical. So let us try to solve this numerical. But before starting the solution, I will suggest you to write down the question properly in your notebook. Because if you write down that question properly, then in the next part where I will erase this question, you may find some difficulty. So you write down this question properly. Every time I will discuss question, each time you should note down the question properly in your notebook and you try to solve along with me. Okay, so I am going to erase this question now and I will try to solve the question. So it will be better if you note down this question properly in your notebook. Now try to understand the solution of question number 1. As given in the question, height of the object 4 cm. According to न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उसको पॉजिटिव लेना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ कोई भी मेजरमेंट पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई भी मेजरमेंट नेगेटिव। Object distance negative -20, radius of curvature negative -30, V, M and H dash we are asked to find. So at first we can find out focal length. We know what F equals to R by 2. So R is given -30 centimeter by 2, it is -15 centimeter. तो फोकल लेंथ का पता चल गया हम लोग को। अब नंबर 1 का सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला पता है। वी नो व्हाट 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f. ये है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। सो यहाँ पे अगर हम लोग को u और f का वैल्यू पता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर v. सो 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. 1 by v is equals to 1 by f. f का वैल्यू है -15 minus 1 by u. u का वैल्यू है -20. So 1 by v is equals to, we can write -1 by 15 plus 1 by 20 plus 1 by 20. So 1 by v is equals to, if you find the LCM of 15 and 20 you will get 60, and now if we simplify we'll get -4 plus 3. So 1 by v is equals to -1 by 60, therefore v is equals to -60 centimeter. तो हम लोग को पोजीशन ऑफ इमेज का पता चल गया, पोजीशन ऑफ इमेज इज -60. तो यहाँ पे we can write down properly in statement the position of image formed. The position of the image formed. The image is formed (60 centimeter away). 60 centimeter away in front of concave mirror. in front कैसे पता चला? माइनस साइन, नेगेटिव साइन, यानी रियल इमेजेस फ्रंट में ही फॉर्म होता है कॉन्केव मिरर में। सो द इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। और आपको अगर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं। वो क्या है कि
कि ये सब तो इतना तो सबको ही पता होगा. द इमेज इज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एंड एग्जैक्टली यू कैन मेंशन हियर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आपका प्लस पॉइंट होगा. बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आप मेंशन कर सकते हैं. तो सो अगर आपका डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत आसान है. सो पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज इज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे नंबर 2 में हम लोग को पूछा गया मैग्निफिकेशन. वी नो m इक्वल्स टू माइनस v बाई u. m इक्वल्स टू माइनस v बाई u. सो m इक्वल्स टू माइनस v का वैल्यू है माइनस 60 सेंटीमीटर. u का वैल्यू है माइनस 20 सेंटीमीटर. सो यू विल गेट माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, -3 एंड देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन. ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मीटर मीटर होने से भी कैंसिल हो जाएगा. देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, -3. नाउ इन द थर्ड पार्ट यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट height of the image. Again we know what? We know the formula m equals to h dash by h. m equals to h dash by h से हम लोग आराम से h dash फाइंड आउट कर सकते हैं. h dash का मतलब क्या होता है? h dash का मतलब है it is size of the image. So h dash is equals to m into h. h dash is equals to m into h. m का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है. m का वैल्यू इज -3 और h का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. h इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर. सो इट इज -12 सेंटीमीटर. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इन दिस केस, साइज ऑफ द इमेज इज -12. और आप अगर ठीक से देखेंगे क्वेश्चन को, m का वैल्यू -3 मिलने का मतलब क्या होता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और 3 इंडिकेट करता है कि द इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड. और देखिए आंसर, इमेज इज ऑलरेडी एक्चुअली 3 टाइम्स मैग्नीफाइड. यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर. ये माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड है, इसीलिए माइनस साइन. इन्वर्टेड यानी अपसाइड डाउन है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है. सो एच डैश इज -12 सेंटीमीटर. फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया आपको? आपको पूछा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. अब नेचर हमको बताने के लिए अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन सबसे इजी ऑप्शन मुझे लगता है बी का आंसर. देखिए वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में? ये नेगेटिव में है. सो वी कैन राइट द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. सो आपको ये भी पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि इमेज किस तरह फॉर्म हो रहा है, मिरर के फ्रंट में या मिरर के बिहाइंड में. तो अगर आपको पता है रियल इन्वर्टेड इमेज, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन प्रॉपर्ली, आई गारंटी यू दैट यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड the next 4 question, and 5 questions will be given to you for self practice. That will be much easier for you if you focus on next 4 particular questions. Now the question number 2, and this question is for your self practice. This question is similar to question number 1, so I don't think there is need for explanation of this question. If you try, you will be able to solve it easily. So note down this question. An object of size 5 centimeter placed at a distance of 25 centimeter from the pole of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. Calculate the distance and the size of the image formed. What will be the nature of the image formed? Okay, so for your convenience, for practice, I am giving you the answer, but later on I will WhatsApp you a proper sheet of many numericals that you can try at home. Okay, so the answers are -37.5 centimeter, -7.5 centimeter, and the nature of the image real and inverted.
So try to solve this particular question. Now question number 3, we are going to discuss solution of this particular question. Question number 3, an object of size 5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance should a screen be placed so that a sharp image can be obtained on the screen, sharp image of the object? So let us try to understand this question. And here the question is related to concave mirror. Pole, focus, center of curvature. Here it is given object of size 5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 15. So focal length yani gap between F and P is 15. And object distance is 30 and we know that CP is double of FP यानी radius of curvature focal length से double होता है और object distance भी वही है. That means object is placed at center of curvature. And from the concept of ray diagram हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर object center of curvature में होगा तो image is also formed at center of curvature and the size of the image is equal to the size of object. So question में ये पूछा गया at what distance should a screen be placed? स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन करना है? स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करना है. कैसा इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है या लिया जा सकता है? रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. तो यहाँ जो इमेज बनने वाला है वो इमेज रियल इमेज है और ये इमेज को स्क्रीन पे लेने के लिए स्क्रीन को यहाँ रखना होगा. स्क्रीन को यहाँ रखना मतलब इमेज डिस्टेंस ही स्क्रीन का डिस्टेंस होगा. So screen should be placed at a distance which is equal to the image distance. So in this particular question अगर हम लोग solution पे focus करें, height of the object given है जिसका requirement है कि नहीं लगता नहीं मुझे. So height of the object is given, it is 5 centimeter. Object distance it is given minus 30 centimeter. Focal length is given minus 15 centimeter. U नेगेटिव या F नेगेटिव क्यों ले रहा हूं उसके लिए तो आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे फोकस करना ही होगा. सो U नेगेटिव अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और F कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज नेगेटिव. इससे हम लोग को फाइंड आउट करना है V और V का जो आंसर आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन बिकॉज रियल इमेज ही स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है. इमेज जहां फॉर्म होगा स्क्रीन वहीं लगाना होगा. So from spherical mirror formula we know that 1 by U plus 1 by V is equals to 1 by F. So we have to find out V. So 1 by V is equals to 1 by F minus 1 by U. 1 by V is equals to 1 by F. F का value it is minus 15 minus 1 by U. So U का value minus 30. So 1 by V is equals to 1. We can write minus 1 by 15 minus plus 1 by 30. So 1 by V is equals to LCM of 15 and 30 will be 30 if you find it out. So minus 2 plus 1. So 1 by V is equals to minus 1 by 30. Therefore V is equals to minus 30 centimeter. So जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उतना ही इमेज डिस्टेंस आ गया कि नहीं. और ये आना भी था क्योंकि हम लोग को तो डायग्राम का कॉन्सेप्ट से पता है ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इमेज भी कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. So V is minus 30. So we can write here the screen should be placed
at a distance of 30 centimeter from the mirror. The screen should be placed at a distance of 30 centimeter from the mirror. So this is the question. This is the important question. In many times you will be asked to find out the distance of the screen or the place where screen should be placed to get the image, and we know that real images can be obtained on the screen. Now note down question number 4, and this question is for your practice, self-practice. The question is, at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter an object must be placed so that the image is formed 20 centimeter away from the mirror? This is, I think, the simplest question that we are discussing today. Here in this question, focal length is given. In this question, image distance is given. You are asked to calculate object distance, and very simple question. Try to find out the answer of this particular question. Now question number 5. Till question number 4 we discussed about concave mirror, and this question number 5 is related to convex mirror. And the question is, an object of size 4 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Calculate the position of image, magnification and the size of image. And we have to think about the sign convention once again about convex mirror. So in this question, size of object is given 4 centimeter. According to new Cartesian sign convention, height of the object is taken as positive. Object distance is 20 centimeter and it will be taken minus 20 according to convention. Focal length for convex mirror is positive, so it is 15 centimeter. Focal length is 15 centimeter. And you are asked to find out position of image, that is V, magnification, that is M, and size of image, that is H dash. This question is similar to question number 1, but question number 1 was related to concave mirror and this one is related to convex mirror. So to find out V for number 1 part, we can use spherical mirror formula. 1 by U plus 1 by V is equals to 1 by F. So 1 by V is equals to 1 by F minus 1 by U. So 1 by V is equals to 1 by F. What is the focal length given? 15 centimeter. Minus 1 by U. Object distance is given, it is given minus 20 centimeter. Minus 20 centimeter. Okay. So here focal length is 15 and object distance is 20 and you are asked to calculate V. So if we continue from there, 1 by V is equals to 1 by 15 plus 1 by 20. So 1 by V is equals to LCM of 15 and 20, 5, 3, 4. So it is 15 4 just 60. LCM is 60. So it is 4 plus 3. So 1 by V is equals to 7 by 60. Therefore V is equals to 60 by 7 centimeter. And this is, if you divide, you will get 8.57 centimeter. So if I ask you what is the position of image,
the position of image is formed at a distance of 60 by 7 centimeter or 8.57 centimeter. And if we follow that diagrammatic representation of this particular question, this is convex mirror, an object is placed in front, and we know that if object is placed in front of convex mirror, the image is always formed behind the mirror between P and F. So if I ask you what is the position of image, the image is formed 8.57 centimeter away from convex mirror, and the image is formed behind the mirror, between, more properly we can write, between F and P. So we have calculated the first part, position of image. Image is formed 8.57 centimeter away from convex mirror. The image is formed behind the mirror. The image is formed between focus and pole. Now second part of the question, you are asked to calculate magnification, and you know that M is equals to minus V by U for spherical mirror. So M is equals to minus V, value of V is, it is 60 by 7 centimeter, and value of U is minus 20 centimeter. So M is minus will become plus, so it is 60 by 7 into 1 by 20. If you simplify it, you will get this, and M is equals to, it is 3, so it is 3 by 7. So if I ask you what is the value of magnification, it is 3 by 7, and positive magnification indicates what? Virtual image is formed. And the image is 3 by 7 times the size of object. Image is 3 by 7 times the size of object. But we can find out the size of object accurately by using formula. So number 3, you are asked to calculate size of image. Size of image, to calculate that, we have the formula M equals to H dash by H, where H dash is the size of image, M is magnification, and H is the size of object. So H dash is equals to M into H. M का value क्या है? 3 by 7. So it is 3 by 7 into H. H का value हम लोग को given है, it is 4 centimeter. So you will get 12 by 7 centimeter. If you solve, you will get 1.71 centimeter. तो ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर था और इमेज का साइज हो गया 1.71 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इमेज इज स्मॉलर. और हम लोग जानते हैं बाय दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रे डायग्राम, हम लोग को फोकस उस पे करना है. By that concept we know that a virtual image is formed by convex mirror, and that image is always diminished or smaller. So the answers that we are getting here, position of image is 60 by 7 centimeter, magnification 3 by 7, and no unit is there, and size of image is 1.71 centimeter. Note it down. Now question number 6, and this question is for your self practice. The question, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a spherical mirror, and the image is formed at a distance of 30 centimeter from the mirror on the same side as the object. Find the focal length of the mirror and name the mirror. That means you have to find out the nature of the mirror, we can say, or name of the mirror. So in this question, just I am giving you some hint here. In this question, object distance is given, then
image distance is also given. You are asked to find out focal length. Here in the question it is given that the image is formed on the same side as the object, and by that you will have to know whether the image is real or virtual. I have already given this concept in the last part. So you have to know that whether the image is real or virtual, and the hint is given here. The image is formed on the same side as the object. So u is given, v is given, find out f. And if f is negative, you are getting negative answer for f, then the mirror is concave mirror. Concave mirror is also called converging mirror. And you are getting f as positive, then it is convex mirror. Convex mirror is also diverging mirror. So whenever it is asked nature of the mirror, you should answer like this, diverging or converging. And if you are asked the name of the mirror, then you should answer like this, concave and convex. So if f is negative, concave, f is positive, convex mirror. So if I ask you what type of images are formed in front of the mirror, real or virtual, the answer is real image. What type of images are formed behind the mirror, the answer is virtual image. And you know that real images are always inverted and virtual images are erect. Now another question which is related to magnification, and this is question number 7. A concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at a distance of 20 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. Okay, so here if you look at the solution, here magnification is given. How can I know that? The image is 2 times magnified in real image, and we know that for real image magnification is negative and 2 times magnified, so we can write 2 here, and there is no unit for magnification, so m is equals to -2. Then object distance is given here. Object is placed at a distance of 20, or object distance according to sign convention -20. You are asked to calculate focal length. Okay, and we know the formula, m is equals to minus v by u. So m is equals to, here value of m is given, -2 is equals to minus v by u, it is -20. Therefore -2 is equals to minus will be plus, so v by 20. Therefore, okay, we can write v is equals to -2 into 20 centimeter. Therefore v is equals to -40 centimeter. We are asked to calculate f, but first we have calculated v, because if you know u and v, you can easily calculate f by using spherical mirror formula. Now from spherical mirror formula we can write 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. So 1 by f is equals to 1 by u. 1 by u, u is -20, plus 1 by v. 1 by v, v is -40. So 1 by f is equals to, we can write -1 by 20, and here -1 by 40. 1 by f is equals to, LCM of 20 and 40, you will get 40. So you can write -2 and here -1. So 1 by f is equals to -3 by 40. Therefore f is equals to -40 by 3 centimeter. -40 by 3 centimeter, or if you divide you will get 13.33 centimeter. Okay,
So in this particular question, magnification was given, object distance was given, and you are asked to calculate focal length, and this is the way of solving this numerical. Now question number 8 for your self practice. ये question number 7 के जैसा ही है. You try to solve it. Find the position of object which when placed in front of a concave mirror of focal length 20 cm produces a virtual image which is twice the size of object. तो यहाँ पे भी magnification given है, nature of image given है, and twice the size of object. तो यहाँ पे m का value we can consider 2 या +2. ये +2 और 2 लेने का रीज़न क्या है कि इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो मैग्निफिकेशन हम लोग को यही बताता कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बिगर या स्मॉलर है, एंड प्लस साइन इंडिकेट्स इट इज वर्चुअल. और आपको फोकल लेंथ गिवन है f इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर -20. तो m और f से आपको u फाइंड आउट करना है. ओके, सो m और f से u फाइंड आउट करना है इसमें. Think about this particular question. Now we are going to discuss another question, question number 9, and one of the most important pattern of questions. Question number 9, a convex mirror produces 3 times smaller image of an object placed in front of it. Calculate the object distance and the image distance if the focal length is 10 cm. So if the question is related to convex mirror, and you should know one thing, a convex mirror always produces virtual image. So here the nature of the image is not given, and about magnification it is given. The image is 3 times smaller. So if you look at the solution here, the information that we know from the question, m is equals to 1/3 we can write. M is equals to 1/3 indicates the image is 3 times smaller, and value of m, if it is positive, then it indicates virtual image. Then focal length is also given. Focal length of convex mirror is positive, and you are asked to calculate u and v. To solve this particular numerical, first we can use the formula m is equals to minus v by u. M is equals to value of m is given here, 1/3 is equals to minus v by u. Therefore we can write here v is equals to minus u by 3. This is relation 1. Then by using spherical mirror formula, that is 1/u plus 1/v is equals to 1/f, we'll try to find out the value of u. So 1/u plus 1/v, so we can write here minus u by 3 is equals to 1/f, that is 1/10. So 1/u minus 3/u is equals to 1/10. So minus 2/u is equals to 1/10 we'll get. Therefore u is equals to minus 20 centimeter. U is equals to minus 20 centimeter. So we got the answer. One part of the solution we have done. Object distance का पता चल गया. And now we want to know about image distance. If you look at here, u का value पता होने से you can find out v from this relation. Now from equation 1 we can write v is equals to minus u by 3. So minus u is minus 20 centimeter by 3. So it is 20 by 3 centimeter. So it is 6.66, or you can write 6.67 centimeter. So in this way we can solve this particular numerical. The very important pattern, note down this particular solution properly. Now the question number 10, last question of this part of video, and the question is for your self practice. The question is,
an erect image 3 times the size of object is obtained with the help of a concave mirror. And you should know that erect images are virtual and the image is 3 times the size of object, 3 times magnified. And radius of curvature is 36 centimeter. You have to calculate the position of image. So in this particular question, you are given M, you are given R, and you are asked to calculate V. Think about this particular question and try to solve it. So we have discussed 5 different questions, and 5 questions were given to you for your self practice. So you should try to solve that numericals at home. And from today onwards, I am stopping that challenge question contest because I will start that online classes from today or tomorrow onwards. And if you are interested, you can communicate or contact us on the WhatsApp number given in the description. So you have to WhatsApp only, no calls will be received on that number. So there will be WhatsApp communication. If you are interested for online classes, you can contact through WhatsApp in the number given in the description. Okay, so thank you for today.